So the first thing that I'm going to do is I'm going to tell you uh, how many types of letters are seen in the general training. Three types of letters are seen, and there are no subtypes. So three, and that is it. Okay. The most common ones are formal, then informal, and the third type of letter is a semi-formal. As you know, there is no choice. So even if there is like very less chances of the semi-formal coming and you are the one who gets it, for you the incidence becomes 100%. So there's nothing like something is important and something is unimportant and you can leave it. When you don't have a choice, you are given one letter to write, you have to write on that letter. Just do it. Just do all the types. All right. Now, first thing. Uh, whatever I'm going to teach you, these are not hard and fast rules कि आपको you have to do just like this only, but these are tried and tested. Students have got 7.5 plus even with these formats. So just follow them. You have got one letter to write in the exam. Just follow the ways that I teach you. Practice in that way. You don't need to learn 5 ways to write a formal letter or 5 ways to write an informal letter or 5 ways to write the top and the bottom of the letters. Just follow one pattern, practice that pattern, and you will get a good score. Another myth that is commonly seen is that letter is less important, essay is more important. Well, yes, in one way, it is correct that letter is less important because it has one third of the weightage and the essay has two-thirds of the weightage. So, what it means is that whatever band score you get in the letter, one third is counted, and whatever band score you get in the essay, two-third is counted for a total band score. For example, if in the letter you get, say, in the letter, it is very possible, very much achievable if you practice to get an 8 out of 9 or even 8.5 out of 9. Very, very achievable. Okay. Supposing in the letter you get an 8. Supposing. Okay. And you can practice writing the letters in these formats. And trust me, letter will remain 10-12 minutes task for you. You can give more time to the essay then. So if you practice your letters well, you write your letter in 12 minutes, then what will happen is that you'll have more time for the essay. Supposing you get 8 in the letter and you get only 5 in the essay, only 5. Okay. Now, how is the score calculated? 8 plus 5 plus 5. How much is that? 18, right? And the total score becomes divided by 3, and the total score becomes contribute, students. You should contribute. It looks I'm silently talking to nobody. Six. Total score becomes 6. Okay. So 8 in the letter is very, very achievable, and total score becomes 6, which is the requirement for many students. Now, the students who need a 7. Supposing you get an 8 in the letter and you get a 6 in the essay. So what will be the total? 8 plus 6 plus 6. Okay. So how much is that? 6.66, it becomes 7. So imagine you need an 8,777. How important the letter is. Even if you get just a 6 in the essay, you can reach a 7 overall with a good letter. Okay? So letter is important. Don't think it is less important. And it's very easy. Second thing, whenever you get a letter, read it properly. Read it properly. Okay? Read it 2, 3, 4 times. And you can see that if it is, translate it in your language of convenience, that is your mother tongue. Okay? And it will be very easy. Yes, ma'am. And okay. So this is, that's very important because I've seen when students write the letter and, then when I check it, I find that it is as if the student has not even read the letter properly and is writing something else. Sometimes the tense goes totally wrong. For example, the letter is that you had an appointment with the bank manager and you missed it, so write a letter and suggest him to, request him for a, rescheduling the appointment or another appointment. Okay, fixing another date. Now you had an appointment, you missed it. This apology will be different.
and the request will be different. And if the letter says that you have an appointment but you cannot go on that date, so write a letter to the bank manager. So then the letter will be that you have an appointment, yet you still that date hasn't come, but unfortunately you are already occupied on that day because of some reason. Now, what I mean is that when you should imagine a real life scenario, okay? Supposing you are writing to a bank manager to reschedule, to re schedule an appointment, and the reason you put is that on that day you have planned to go for a movie with your friends, so you cannot come for the appointment. It look weird, will it? Will it not? Yes, ma'am. Yes. So what you should write there is that you should have such an excuse which sounds very genuine. So just imagine a real life scenario. You have an appointment with the bank manager and now you cannot go on that date. So you have to put such an excuse that the bank manager has to understand, okay, and will readily fix an so that excuse can be that some person in your family has fallen sick and you have to take him to the hospital on that very day you got an appointment, so you cannot reschedule, get that appointment rescheduled because the health of your family member is definitely more important. It can be your mother or your father or your child or anybody for that matter, right? So the manager will also understand. So this is how you have to, you must read the letter very properly. Now, how do you have to write the letters? So these are the letter types and the salutation. Salutation is the beginning and the closing. How do you begin the letter? Sometimes when they give you a letter to write, they give the line below that, begin your letter with dear sir or madam, comma. Now then nothing is left for you to do. You just say dear sir or madam. Now when you begin your letter, dear sir or madam, it's a formal letter, okay? Dear sir or madam. Then below the letter, after your letter has finished, you will write yours faithfully. Just note this yours, Y is capital. Faithfully, F is small. Just note here, sir, S is capital, D, dear is capital, S is capital, M, madam is capital. Okay, the names. So note these points. These are very important. Some children will put an apostrophe over here, which goes wrong. Some will put the Y small, which goes wrong. Some will put the F capital, which goes wrong. Some will not put this comma here, which goes wrong. Now, these simple things will add to your band score. Okay, don't do Yes. these mistakes. You cannot afford to do these mistakes because these are very simple things. If you learn them, you learn them, right? And you will do mistake in them only if you are very, very careless. If you are slight bit careful, even then you will avoid doing these mistakes. So is that clear? Yes, ma'am. All right. Then, after this salutation, sometimes in the formal letter, you begin the formal letter with a surname like Dear Mr. Prabhakar, Dear Mr. Sharma, then Dear Mr. Sharma. Then, when you end your letter, you will write yours sincerely, not faithfully. It will be sincerely, and you can note yours is like that, Y capital, no apostrophe here, sincerely, S is small. Okay, and then a comma, and then below that your name. Okay, now sometimes there is a semi-formal letter. What is a semi-formal letter, by the way? Semi-formal is neither a friend nor formal. Okay, let me ask you, supposing you have to write a letter to one of your classmates. Okay, you are organizing a reunion, and there is an alumni meet or something like that, and you have to write a letter to your classmate to come. What category will that be? Friend, formal, or semi-formal? Ma'am, semi-formal? Semi-formal. See, logical, right? Because he's one of the classmates. It's not like he's Yes, your best friend or yes, something. yes, exactly. So it's logical, nothing like that which is not logical and you are having to memorize it. Okay, okay. Now, if the friend, you have to write a semi-formal. It's understandable, right? Semi-formal is Yes, ma'am. neither friend nor formal. Okay. Supposing you have to write a letter to your neighbor, what will that be? Will it be formal with a No, neighbor? Again, it's also semi-formal. like Again, supposing you have to write a letter to a teammate. colleague, semi-formal. Semi-formal.
Teammate is football teammate. You're playing in a team. You Oh, have to write a letter to the teammate that you will not be able to come for the practice sessions for some time as there is some emergency at home, something like that. Teammate letters are there. Okay, that letter is also semi-formal. Supposing you have to write to one of your colleagues who's working with you at the office. It's also neither friend nor formal, right? yes, ma'am. Yes. Acha, okay. Sometimes you have to write a letter to. There is one letter in the book, in which there is. Rohit, you are not audible. Were you speaking something? You can rejoin. I just checked the chat session. Okay. No, no, no. Couldn't hear you at all. You rejoin, then it'll be fine. Okay. So, this was about where were we semi-formal. Now, there's one letter in your book, in this book. These are all past letters, where one of your past teachers has invited you for a dinner. Okay. Now, if a teacher invites you for dinner, does the teacher remain formal? No, ma'am. And does the teacher remain informal? Does he remain, become a friend? No, No. So Mm, that also it's semi. I just now gave it a good thought, and I put that category also in the semi-formal. Okay. So Okay. these are very few essays which are semi-formal. These are not formal. These are not informal. These are semi-formal. You just see these examples. Rohit, are you speaking now? Yes, ma'am. Now it's audible. Now you're audible. Okay. All right. Okay. Ma'am, Okay. I had a question here. Yes, yes. So I have gone through all those letters actually one. So the letter types and salutations. So I Yes, had just one confusion over here, ma'am. So yes. suppose like here like with formal with surname and you have also written like one with formal with no name. Okay. Dear sir So or madam is if no. Uh, with dear sir or madam, if we have formal no name, and if we write yours sincerely it'll be instead wrong. of yours faithfully, It will will it be be wrong. marked? It It'll will be be wrong. wrong. Yes. See, that is why I'm telling you, you Okay. have to write one letter, Rohit. You don't have to do a PhD on types. These are tried and tested formats. Do away with them. Learn other things. Just remember that. Okay? Okay, ma'am. Okay, that is it. वो even Okay. So these things are we have to learn, and that's it. That yes, is it. that is it. And it's so easy, right in front of you. Okay? That is it. Mhm. It's easy. Okay. Okay, there's Okay. just three types of letters you get. And when you get a letter that is semi-formal, you start with the name like you start a informal letter, like your friend's name, dear Ramesh, class fellow, you can call him by name, right? A football teammate, you can call him by name. Yes, ma'am. Your colleague, you can call him by name. You don't write surname here in the Yes, sir. semi-formal letters. Okay? And you finish Mm. it with yours truly. Now look at the spellings of truly. True spellings are TRUE, but truly E goes away. TRULY. Just remember that. Semi formal letter, yours truly. Finish it. That is it. Okay? Many students write in the formal letter, below that letter, they will write here best regards, then their name. Now, these things, when you write letters in the general context, they might be correct. They are correct. Okay? But for the IELTS paper, for the IELTS exam, follow these formats. These are tried and tested. They are correct. There are other correct ways also, but I am not sure how many correct ways the examiners have been given to mark correctly. Okay, so Okay, just ma'am. follow these Okay, ma'am. methods. That is, Ma'am, Just cramping them would be fine then. it would I be think. fine. Just one letter you have to write. Okay, 20 minutes you have Okay, to ma'am. devote on the task one. If these things you learn in 2 minutes, you can learn the others. Okay, and these things finish also in the exam. You don't have to think and think and think and write something. These are there. You have practiced them. Ma'am, nowadays, like more or less, uh, like when the question letter comes, Yes. it's they also give you like start with dear. They have Yes. already given like you have to Dear, start with then it dear. is your choice. You Then can follow it with sir, madam, or you can follow it with a name. yes, ma'am. That they Yes, give the ma'am. option. Okay, so that is why I'm saying, Yes. just learn these formats.
Formal can be with a name, formal can be with अच्छा supposing आपको formal letter है, write a letter to your college principal. Everybody knows the name of their college principal. You can write start with dear Mr. Prabhakar. That would also be correct. Dear sir would also be correct, right? But then if they give you the option, start your letter as dear and then blank, blank, blank. You can write a name, you can write. The only thing is you have to So learn how to end it. If you write a name, you end it with and it. sincerely. Yes, If you write with dear yes, sir yes. or madam, you end it with We faith. can't interchange them. We can't interchange your faithfully or your sincerely. It's No, no, uh no. Why do you want to okay. interchange them? You tell me one No, thing. I don't want to no, no, Then, no. The then, thing then is, it is I done. don't Then want just to. do it. See, the time we have given to discuss this point, we could have done one whole letter. That is what I'm saying, Yes, Rohit. ma'am. Okay? Why are we Yes. doing a PhD on this Okay. point? I told you शुरू में ही खत्म Okay. करो जो है. Okay? There may be 10 other correct methods, but these are tried and tested. Do Yes. them, finish it. That is it. Okay, you don't have to give options to your examiner. Okay, sir, I'm writing four closings. You may pick and choose which one you like the best. Will that work? No, ma'am. No, then just finish it. This is it. Okay, that is it. So I hope it's clear to everyone how to begin the letter and how to close the letter. Is it clear? Yes, Yes. ma'am. Ma'am, one that you told about the semi-formal thing, that if a Yes. teacher invites you for a dinner, Yes. that semi-formal we can start with the dear ma'am and then end with the yours truly, because Yes. ma'am, yeah, Yes, because yes, we or can't use the madam, name, or right? even that English Okay. teacher can be a sir also. You can have Yes, yes. either dear sir or dear madam. That is Okay. immaterial. Okay. And then because, but And you, with, yes, but you know, so that one we will end with yours truly, right? yes, Yeah. Okay. Okay. yeah, Okay. yours truly. So Yeah. semi-formal are very few. Just remember, classmate, neither friend nor formal, colleague, neither friend nor formal, um, roommate nahi, neighbor, neither friend nor formal, then teammate, your football teammate or your cricket teammate, neither friend nor formal. So these are the options. Then one letter which I just noticed while I was teaching that, oh, the friend, if the teacher has invited for dinner, the teacher is opening friendly relations with you, an ex-teacher, okay? Now the teacher may want to develop friendly relations with you, so he has invited you for dinner, right? So Mm. then that will be neither formal nor informal now. That will be Yes, ma'am. semi-formal, right? So it's Yeah. all logical. That is it. Just finish it over there. Okay. Okay. All right. So there are four marking criteria for the letters: task achievement, cohesion, coherence, lexical resource, grammatical range, and accuracy. Task achievement, read the letter properly. And then, write or cover all the bullet points given below the letter. You may cover them in sequence, you may cover them without the actual sequence given there. It does not matter as long as you cover all the bullet points. And the letter is not very lengthy. The examiner can look at one glance whether you have covered all the points or not, right? Now, as far as cohesion and coherence is concerned, the letter should be well organized, logical flow of the information presented. Okay, that is it. How you have to write that. It should be well organized. The flow. If you have to write the next point, you can say in addition or moreover or furthermore. You can use such connectors here also. Lexical resources, the vocabulary. You don't need to put very big words, flashy words, or something. Just the routine words used correctly, that will count to your vocabulary. Okay, and grammatical range and accuracy, just try most of the sentences in simple sentences, a couple of sentences complex or compound, one sentence you can put in the passive form. You know the passive form, you can say that like Rita makes tea, tea is made by Rita. That is a passive. So in the essay, the easiest way is it is believed by some. Some people believe it is believed by some. You are showing your passive right in the beginning, okay? In the introduction. Just one sentence or two sentences at the most of passive voice. Passive voice is not in fashion nowadays. In the actual scenario of work, passive voice is not considered good, but in the IELTS exam, you have to show your grammatical range. So at least put one sentence in the passive voice. Okay?
Is that clear? When we'll read Yes. the letters, we'll see where the passive is coming. Okay? Ma'am, Then, ma'am, yes, Yes, ma'am. yes, yes, ma'am, like the way you said, these yes, kind of sentences. So yes. they are examples given in the book, right, ma'am? Your book, you have All given the. I have written around 180, 90 letters. I don't exactly remember them. All these letters are No, no, part I all just wanted to know. I can use those formats, right? Um, Yes, Rohit, you can use these formats. My students use these formats. See, if you have this is one thing in the minds of many students that if everybody will write the same, then the examiner will think it is copied or cheated. What the examiner will think if you all write yours sincerely after writing a name on top? Okay, and second point, all of you are not taking the exam on one day, right? All of you are not Planning in the same one country. destination. All of you are not in the same country. All of you are not going to the same examiner. Okay? So it does just doesn't okay. matter. It just doesn't matter if you write what is written. Um, But I mean, you have to make your letters original. I welcome originality. Use these as ideas, but don't change the basic formats, the basic things which are tried and tested, and they are correct. Okay, supposing bank manager, you have to write to reschedule your appointment. You can, if in my letter it is written that my mother has fallen sick, you want to put some other example, you can say on that very day my cousin's marriage has been fixed and I cannot miss it. That will also be good but enough. supposedly, ma'am, but Yes, supposedly there is a question, ma'am, which yes, we have gone through in your book, right? yes. And that time I'm not able to come up with a new idea of mine. Write Okay, that, so if write I that. write that Yes, same excuse, will it be wrong? Considered wrong? not No, not no, at right? all, not at all. Why? Not at all. It will not be considered wrong at Okay, all. Okay. Acha Rohit, one thing mm, I'm telling you, there is another big center, a giant. I am a small fish. Another big center, a giant. They have taken out a book, which they give to their students when they join their center. Okay. And from that book, okay, one of the students was reading a letter, and what I had done in my letters was I had given my original number. Okay, in my letters, the solutions that I have provided to the students, that's sample answers. I had written my original number, and that student is from that other center. He calls me and says, "Ma'am, is it you?" I said, "Yes." "Ma'am, I can't believe it is you. I was going through the letter in my book, and that center has not even taken the trouble to change a few words of my letters, pick them up, and put them in their book as such, because they also as know it is, that ma'am. these are the past letters and they have been seen in the exams and they are likely to be repeated. Okay? But ma'am, Okay, as a student, I when I write the same thing that I feel that I copy the letter, it is okay or not? Nahi, nahi, it is, see, I tell you one thing, Preksha. What I was telling is that you are all spread up all over the world, right? Yes, ma'am. And you are not taking the exam on one day, you are not going to the same examiner. If you write an essay, how much possibility is there that those teachers have read my book and they know what is written here and they know you have copied it? No chance. 0.0001% chance. Okay, Okay, ma'am. don't worry about it. Okay. okay, ma'am. Okay, ma'am. Yeah, so just don't give it another thought. That's fine. And when you're Because, ma'am, writing the same everywhere, thing, even then the words are different. Okay, you cannot mug up word by word and reproduce in the exam. Just use the story. Yes, that is it. The wording will be yours. There will be because originality. You will write different name on the top. You will write a different name at the bottom. So it will be different, right? because ma'am, Yes, everywhere ma'am. wherever we read or any YouTube video we watch, everywhere is there you should be original. Your wording should be original. There I am not shouldn't be denying copied. I am not denying that. But Mm. if for originality you say ki in friend ki letter mein I'll not write yours lovingly below. I will write something else because it I will be my original thing. That will be wrong. I Okay, got what your is point. correct is correct. Okay, Yes, that is it. yes, And these are tried and tested formats. Students have come out with 7.5 and 8. Today only I was telling one of my students that
he was also like this, ki, this will be original. I have to write different. I have to write. So I told him it was a discuss essay. The topic sentence, he was picking it up very wrongly. I said, you want to write something different. You will get each and every, he was making a lot of punctuation errors also, a lot of grammatical errors also, and wants a 7 band. Now, if he writes whatever I have written, the same points, and he works on his grammar, he can reach a 7 very soon. Okay. Now, what he was doing is he was working different ideas. Now, ideas go wrong, things go wrong. I corrected him for the ideas. On top of that, he's making punctuation, grammatical errors, and other errors, spelling errors also. So I told him, I said, see, you are, if supposing there are 200 essays you have to do, you are making them 400. And how much time do you have? Look at that. If you have 6 months to prepare for IELTS, I would appreciate your originality. If you have just a month to prepare, let the originality take a back seat. Do away with getting a good band score in just 30 days or 15 days of practice. That is it. That is what I'm saying. I'm not saying it's wrong to be original. It's very welcome to be original, but see your scenario also. Do you have a lot of time to get every original idea checked and, seen whether it's correct or not? No, ma'am. Or I you mean, any just case, one we just want to achieve that particular band. That is band it. score? That We're should be just the aim. finding ways. That is the We are aim, just finding ways. Yes, that Yes, is the ma'am. aim. And in finding you have different types of other mistakes also. Let them be corrected. If the idea is same and your letter doesn't have a mistake, trust me, you'll get 7 plus. Okay, ma'am. ओके, आइडिया सेम है, उसके Okay. लिए कभी किसी के कम बैंड नहीं आए, गलतियों की वजह से कम बैंड आए। कैपिटलाइजेशन एरर्स करी होती हैं, अगर मैं कॉमा की, उसको मैंने बोला, मैंने कहा मेरे आइडियाज की वजह से तेरे कम बैंड नहीं आएंगे, तेरे कम बैंड है बिकॉज यू आर मेकिंग एवरी सेंटेंस कैपिटल लेटर, 3 और 4 लेटर्स कैपिटल। मेरा एफ ही ऐसा है मैडम, मेरा एफ ही ऐसा है, मैं इसको ही स्मॉल मानता हूँ। मैं गो एंड टेल द एग्जामिनर दैट, जब वो चेक करने लगे पहुंच जाना वहां पे, बता देना कि मेरे एफ को छोटा मानो प्लीज। ओके। I mean, how you write the alphabets is really important, See the especially in F, pen and F, paper. capital F is capital F. Okay, and small f is small Okay. f. If every F you will write as a capital, it will be a mistake, right? So the Yes, ma'am. grammar band score will go. That is it. I face that problem, ma'am, so I am working on that also. Yes, yes, yeah, I know, I know. It's not just you, Preksha, there's so many students. Okay, so many. Yes, Once ma'am. I had a student, he had this capital P problem. Every P was capital. Every P. Ma'am, I write like that only. I have written like that all my life and I cannot change it now. I said, how old are you? He says, I'm 18. I said, okay, I am more than double your age, 3 times your age. Okay, at that time I was like 50, mid 50s, and I can also learn something and change my way of writing, so why can't you? I mean, all your life is not all like 18 years is 18 years, still you can change. And that time he didn't change, he came out with a 5.5 in writing. In all others it was a 7, and the second time then he worked on his P's and he got a 7 in writing. So it was a very big blow for him. He had to pay the IELTS fees twice just for the P. Okay. So Oh, so many P's come there, and the examiners count each mistake as one mistake. The grammar portion was totally gone. 25% marks are on grammar. You make 10 mistakes of grammar, how can you expect a good score? And every time the P becomes capital, every time it's counted a separate mistake. Okay. So you have to work on the small mistakes, forget about the same ideas. That will not matter at all. Okay, just be correct, write simple correct English, you will get a good score. Okay, that is how it goes. Even in the speaking also it's like that. Simple answers correctly spoken with fluency carry a better band score. Okay, that is it. So that is about it. Then we'll come to the band descriptors for task one. I have not written any other band descriptors. I've written the band seven descriptors. So band seven descriptors are here in front of the task, front of you, because most of you need an 8777 in the GT. So 7 band covers the requirements of the task. जो जो मांगा है आपने सारा cover करा है, covers the requirements. First point,
presents a clear purpose with the tone consistent and appropriate. मतलब clear purpose है. अगर आपकी जो letter है मैं आगे आऊंगी उस पे. So this is task achievement. ये पहला task achievement है. This is cohesion and coherence. 7 band के कैसे logically organizes information and ideas, that is clear progression throughout range of cohesive devices appropriately. दो में भी सम अंडर यूज और ओवर यूज, ये इससे भी 7 आ जाएंगे. ओके. देन सफिशिएंट रेंज ऑफ वोकेबुलरी, दिस इज लेक्सिकल रिसोर्स, सफिशिएंट रेंज है. एंड लेस कॉमन लेक्सिकल आइटम्स विद सम अवेयरनेस ऑफ स्टाइल एंड कॉलोकेशन. कॉलोकेशन होता है जिस जिस ऑर्डर में हम बोलते हैं किसी को. जैसे हम व्हेन वी से प्लीज पास मी द सॉल्ट एंड पेपर, आपने कभी किसी को बोला प्लीज पास मी द पेपर एंड सॉल्ट? When we say in Hindi, we say roti, kapda और मकान. Do we say मकान और कपड़ा और रोटी? ये तीन necessities हैं. We say roti, No. kapda, मकान. ठीक है? In English, we say food, clothing and shelter. It's the same order. Shelter, clothing and food नहीं बोलते. Food, clothing and shelter. Basic requirements. In Punjabi, it is kulli, gulli, te julli. Okay, food, clothing and shelter. So that is how it is done. These are collocations. We say tall building. We don't say high building. अगर ऊंची कोई बिल्डिंग है उसको टॉल बिल्डिंग बोलते हैं, हाई बिल्डिंग नहीं बोलते हैं. सो ये कॉलोकेशंस है, ये आपको आनी चाहिए, ये प्रैक्टिस से आ जाती हैं. व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर डेली यू कम अक्रॉस सच टर्म्स. जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जुवेनाइल वर्ड के साथ डेलिंक्वेंसी जचता है. हम चाइल्ड डेलिंक्वेंसी नहीं बोलते, यंग पीपल डेलिंक्वेंसी नहीं बोलते. वी से जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी. वी जुवेनाइल इज यंग पीपल. वी डोंट से यूथ डेलिंक्वेंसी. वी यूज द डेलिंक्वेंसी वर्ड ओनली विद जुवेनाइल वर्ड. Okay, so these are collocations, you have to learn them, but they come across, you come across these collocations as you know just read anything and everything that comes your way. And then variety of complex structures use करने हैं for the grammar, and frequent error free sentences, good control on grammar and punctuation. ओके, कॉमा, फुल स्टॉप, कोई और पंक्चुएशन भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, और जस्ट लर्न द कॉम यूज ऑफ कॉमा एंड द फुल स्टॉप. दे शुड बी देयर. ओके. So this is it. This is about the band 7. Anybody knows the spellings of the comma? What are the spellings of comma? COMA. वो तो कोमा C होता O है. double M C O double प्रेक्षा, M A. प्रेक्षा, अगर कोई पेशेंट आपका सर दर्द हो ना, Yes, ma'am. अगर कोई बेहोश होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो कोमा में चला गया. Coma. ओके. वो Yes, कोमा ma'am. होता है COM में. दिस इज COMM में. ओके. कॉमा, कॉमा, COMM में. एनीवेज, चलो. नाउ वील गो टू द जस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ लेटर. ओके. Ma'am, do we have a video on comma and Yes. Maybe I have taken a class earlier. I'll find out that on the punctuation. Okay. I'll share okay, that class, grammar class with you. okay. Okay. I'll share it for everyone to go through if you, that is it. Okay. But it Okay. will be there in the members arena. I'll put it there, so it will Ma'am, be I easy to find. searched, but I don't know how. I So didn't that is why, found. na, that is why it's easy for, because otherwise it is 700 plus videos. It's very difficult to search. And there in the members area there are few videos, so you will be able to look for them over there very easily. Okay. All right. Now this is the first letter here is write a letter to the local authorities for requesting additional sports facilities for your age group in your area. Additional sports facilities means there are some sports facilities, but you want to request for additional sports facilities for your age group. Your age group. Okay, your age group का अपना देख लेना, अपनी age group की बात जरूर करना. Mention about the current sports facility. So current है उनका mention करना है पहले पैरे में, body पैरा में. What kind of additional sports facilities you need दूसरे पैरे में. Third para, how the new sports facilities would be a help for the people in your age group. So these are the three small paragraphs you have made. Now talking about the word count in the letter. Word count, they say not less than 150 words. They do not give the upper word count. So you can go up to 200 words also. But, but, you have 20 minutes with you total. In those 20 minutes, you have to read the letter once, twice, thrice till you understand it completely. Translate it in your mind, in your language of convenience, that is your mother tongue. See whether you have understood it, see the requirement. It will take 2-3 minutes, right?
Then, after you have written the letter, you have to proofread it 2, 3 times. You have to reserve another 2, 3 minutes for that proofreading. So 6 minutes gone out of 20. How much time is left? 14 minutes. In Yes. 14 minutes, you have to write the whole letter. Okay. Now, there is no fun going beyond in a formal letter. Formal letter जो होती है, उसमें अगर आप लंबी लिखोगे, क्या वो पढ़ने वाला इम्प्रेस होएगा कि दुखी हो जाएगा? दुखी हो गया मैं। उसको फालतू की बातें पढ़नी पड़ रही है जो जरूरत नहीं है। जो बी ब्रीफ, लाइक 150 वर्ड से कम नहीं लिखना, 160, 165, 170 वर्ड्स एट द मोस्ट। दैट इज इट, राइट? Yes, ma'am. In that 150, 160 words, try to write everything that has been asked in the letter. That is it. Ma'am, do they count, ma'am, every word, the examiner? दे आर सो एक्सपीरियंस्ड। मैं इतने सालों से चेक कर रही हूँ, मुझे एक नजर में पता चल जाता है ये अंडर लेंथ है कि ओवर लेंथ है। मैम 3-4 वर्ड का तो नहीं पता चलेगा ना मैम, नहीं, तीन क्योंकि चार हम वर्ड भी। तो मैटर ही नहीं करते, रोहित। ओके, बस वही वाली बात है, क्योंकि हम भी मैम एज एन तीन एज अ तीन चार स्टूडेंट वी डोंट हैव तीन चार टाइम टू नो काउंट ईच एंड टाइम नहीं एवरी होता। वर्ड। पर आपको अपनी हैंडराइटिंग का आइडिया है, आपकी एक लाइन में एवरेज कितने वर्ड्स हैं वो लगा कितने लो, वर्ड्स लो आते? यस लाइन मैम, गिन यस। लो, दैट शुड बी डन। ओके ओके। मैम, वैसे ही करते हैं मैम, वैसे ही हाँ, करते हैं। वैसे ही हाँ। करना Ma'am, चाहिए, और कोई मेथड नहीं है। ओके। ma'am, sometime in essay I don't able to go beyond 230 नहीं word. नहीं, वो ऐसे में तो परीक्षा, इफ यू विल प्रैक्टिस तो 230 तो बहुत छोटा ऐसे है। वो तो एग्जामिनर को दूर से दिख जाएगा, विदाउट ए माइक्रोस्कोप दिख जाएगा, Yes, ma'am. छोटा है। वो नहीं आप कर सकते हो, लेंथ। Also, um, सो व्हेन यू I'll रीड द एसेज, लर्न द वेज, कौन से वर्ड्स कहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो वर्ड्स को। दैट इज इट। टॉपिक सेंटेंस मिस कर रहे हो तो वो लगा दो, देयर आर मेनी रीजन, सीधा फर्स्ट रीजन मत लिखो। ओके। ऐसे करो, कुछ ना कुछ तो आपको ये बातें सीखनी है ना बाय रीडिंग एसेज। हाउ इज। yes. मेरे तो एसेज बहुत लंबे लंबे हैं, मैं तो आपको उतना लिखना ही नहीं है, कम ही लिखना है उससे। ठीक है। दैट इज। Okay. हाँ, हो ही जाएगा। लंबे एसेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ये थोड़ी है कि आपको सारे वर्ड्स याद रहेंगे वो देयर। ओके। सो दिस Yes, ma'am. फर्स्ट, नाउ ये वी गॉन थ्रू, मैंने शुरू करा है डियर सर। अब इफ आई हैव स्टार्टेड एज डियर सर, तो नीचे क्या आएगा बताओ? Faithfully. यस, योर्स फेथफुली। और नीचे अपना नाम लिख दो, कोई भी नाम लिख दो, डजेंट मैटर। ओके। उसके बाद इन अ फॉर्मल लेटर, अब ये ध्यान से सुनो जो मैं अब सिखा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले नहीं बोला। अभी फॉर्मल लेटर है ना पहली हमारी, वी हैव ए फॉर्मल लेटर हेयर। ओके। इन एनी फॉर्मल लेटर, पर्पस ऑफ द लेटर से स्टार्ट करना। जिसको भी आप लिख रहे हो, उसको सीधा पहली लाइन पढ़ के पता चले भी ये बंदा मुझे क्यों लेटर लिख रहा है भाई। समझ गए? Yes, ma'am. दैट विल हुक हिम टू रीड द होल लेटर। उसको पहली लाइन से पता होए कि ये लेटर कंप्लेंट की है, रिक्वेस्ट की है, थैंक्स की है, कि जस्ट इन्फॉर्म करने की है। पर्पस ऑफ द लेटर इन द वेरी फर्स्ट लाइन। गॉट इट? बिकॉज मैम अपन इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखते ना मैम। सब्जेक्ट क्या? हाँ नहीं, वो नहीं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है इस लेटर में, आइल्स में। वैसे उसकी हम्म। बहुत वैल्यू है रूटीन में। अब मैं कोई लेटर लिखती हूँ, मैं सब्जेक्ट का कॉलम बनाती हूँ उसमें। हाँ, तो मैम एक्चुअली होता क्या है कि उसके अंदर व्हेन वी राइट द सब्जेक्ट, तो हाँ वो अंडरस्टूड हो जाता है कि हाँ। व्हाट इज द लेटर इज ऑल अबाउट, राइट, टू द yes। अदर और पर्सन टू हुम यहाँ वी पे आर राइटिंग। सब्जेक्ट का जीरो वैल्यू है, वो मत लिखना। हाँ। इसलिए यहाँ पे उस चीज की फर्स्ट लाइन की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज और डियर इन सर द। के ऊपर होता है सब्जेक्ट, डियर सर के यस बाद मैम, सब्जेक्ट नहीं यस, आता। यस। तो इसके सब्जेक्ट आता ऊपर, है। इसके ऊपर वाला तो काउंट ही नहीं ना हो रहा। ये आइल्स की लेटर की यही तो है ब्यूटी, इसमें सब्जेक्ट मैटर ही नहीं करता। डोंट वेस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यू डोंट हैव टू राइट इट, इट इज नॉट मार्क्ड। ओके। सो ओके। डियर सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर। अब ये लेटर है रिक्वेस्ट करने की। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू to provide some new sports facilities for the young people of this age. New sports facilities means already है, पर कुछ नई चाहिए। समझ गए? एडिशनल के लिए मैंने न्यू कर दिया। आई एम कुलदीप सिंह, a resident of गुरु हरगोबिंद नगर फगवाड़ा। आई एम वर्किंग इन HDFC बैंक इन द NRI ब्रांच। तो थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दी, थोड़ा एज ग्रुप इससे आपका पता चल गया कि आप बैंक बैंक एम्प्लॉई हो, तो आप हो गए 30, 35। ओके, लाइक दैट। So is that opening? This is called. These are called opening lines.
So is the opening paragraph clear? Purpose and second sentence your introduction. आप कौन हो? तो जो आपकी लेटर पढ़ रहा है फॉर्मल लेटर, पहले तो पहली लाइन में उसको बता दो मैं इसलिए लिख रहा हूँ भाई, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू दिस। उसके बाद आपको उसने बताना है आप हो कौन भाई, क्यों लिख रहे हो, तो आप हो कौन, तभी वो बंदे को लगे अच्छा ये वो बंदा है। ओके, दिस इज सम कुलदीप सिंह फ्रॉम गुरु हरगोबिंद नगर वर्किंग इन HDFC बैंक। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Opening lines. Then mention about the current sports facilities. ये पैरा इसको देना है। Presently, there are not many sports facilities in this town. Children play sports like cricket and hockey in the ground of the government high school. However, there is no facility for sports in the after office hours. अब स्कूल के ग्राउंड में तो आप शाम तक खेल लोगे। आफ्टर ऑफिस आवर्स ऑफिस बंद होता है 5 बजे 6 बजे। वेयर पीपल ऑफ माई एज कैन प्ले एनी स्पोर्ट, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। तो वो दो, सर देर इज एन ओपन ग्राउंड नेक्स्ट टू द स्कूल which has become a dumping spot for people to throw garbage and other waste materials. This area is under the municipal corporation of the city. This place would be ideal for an indoor stadium for games like badminton and lawn tennis. It is my humble request to use this place for the stadium. तो मैंने सजेस्ट कर दिया। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज शुड बी इंट्रोड्यूस, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैंने ये लिख दिया। ठीक है? Yes, This ma'am. would benefit. How this would be useful? This would benefit not only the young office goers but also the children and youth of this area. Such a place is much needed as we are leading sedentary lives and some physical activity is imperative for all of us. ठीक है? अब hoping for a careful consideration, this is the closing line. This is as important as the opening lines. अब पूरी लेटर में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपने शुरू कैसे करनी है और एंड कैसे करना है। अब ये मैंने आपको Correct. पहले सिखा दिया। ठीक है? सेकेंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ओपनिंग लाइंस कैसे बनानी है। तो मैंने आपको अभी फॉर्मल लेटर की बता दी, ऐसे ओपनिंग लेटर बननी है। ठीक है? उसके बाद क्लोजिंग लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लोजिंग लाइन एक लाइन होनी चाहिए और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक सेंटेंस होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आजकल थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ना जो Okay. एक वर्ड है टू, टू के बाद ना हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। जैसे लुकिंग फॉरवर्ड, जैसे है दैट ही इज गोइंग टू द स्कूल, टू द, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ही इज गोइंग टू डांस। टू डांस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू डांसिंग नहीं आता, इंग नहीं आता। बट लुकिंग फॉरवर्ड टू एज अ फ्रेज, लुकिंग फॉरवर्ड टू एज ए फ्रेज के बाद इंग फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो ये थोड़ा इंप्रेशन आ जाएगा एग्जामिनर के पे कि स्टूडेंट की इंग्लिश। तो ये आप, अब मैंने हर लेटर में लुकिंग फॉरवर्ड टू करा रही हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग गेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू रिगार्डिंग दिस मैटर। एक लाइन है, ये रट लो, ये फॉर्मल लेटर्स में देख लेना ना उस हिसाब से। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, गेटिंग अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, अगर जल्दी रिप्लाई चाहिए, प्रॉम्प्ट रिप्लाई, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो दिस इज वन वे यू कैन गिव एन एग्जांपल। लुकिंग फॉरवर्ड टू एज अ फ्रेज के बाद इंग फॉर्म आता है। ये समझ आ गई आपको सबको बात? नॉर्मली टू के बाद इंग फॉर्म Yes, नहीं ma'am. आता है। ओके? टू के बाद कभी इंग फॉर्म नहीं आता, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है? बट यहाँ पे इंग फॉर्म आता है। ठीक है? लुकिंग फॉरवर्ड टू, आपको फ्रेंड की लेटर लिखनी है ना, उसके नीचे ये लिखना, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। हर लेटर के नीचे यही लिख दो बस, सोचना ही ना मैम पड़े। ओके? मैम मेरे को एक इशू है जो मैं जैसे अ, अपन कोई भी मैटर के स्पेशली फॉर्मल लेटर्स में कुछ ना कुछ कंप्लेन होगी और देयर विल बी एन इशू, राइट मैम? हाँ हाँ। Without because of which we will be writing a letter, right? यस So यस। ma'am, regarding instead of regarding this matter, so हाँ, suppose if we write issue, is it a negative नहीं connotation? नहीं, रिस्पॉन्स फ्रॉम यू रिगार्डिंग दिस इशू, यहाँ पे इशू तो है ही नहीं, इसलिए मैंने मैटर कर दिया। देखो इशू होता है जैसे कोई कंप्लेंट की लेटर है, ये तो कंप्लेंट की है ही नहीं ना, वहाँ इशू लिख दो कंप्लेंट वाले पॉइंट में। अच्छा, ओके। और उधर मैटर फिर मैम इट विल बी अ रॉन्ग वर्ड, राइट रिगार्डिंग मैम? दिस, हाँ, ये हम देखो इशू नेगेटिव कॉनोटेशन है ना। वही वही नेगेटिव connotation है, हाँ, तो तो उसको वहाँ हर जगह we can't use कंप्लेंट की that लेटर, word every place. नॉट नॉट एवरी प्लेस, यस। Okay, okay. देखो वहां पे मैटर चल जाएगा,
अच्छा, हाँ, वहां पे क्योंकि इशू नहीं हाँ। चलेगा। हाँ, वहां पे मैटर हाँ, चल जाएगा। तो यही मैं रोहित बता रही हूँ ना, जो चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है, पता है कि ये तो पक्का सही है, वो कर लो। हाँ, दैट इज इट। बिकॉज मैम यहाँ पे इशू के लिए whenever you इशू have के an, लिए आई वाज नॉट श्योर कि ये नेगेटिव कॉनोटेशन है हाँ, या नहीं है। नहीं, इशू तो वही वाली बात। नेगेटिव कॉनोटेशन है ना। ओके। हाँ, कॉनोटेशन होता है किसी वर्ब के। अब मैं आपको एक कॉनोटेशन का एग्जांपल देती हूँ। हिंदी में जलन कहते हैं ना, मेरे को उससे जलन है, ईर्ष्या, ईर्ष्या होता है। ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या। जलन और ईर्ष्या दोनों वर्ड्स हिंदी सेम है में। ना। अच्छा, हाँ। इंग्लिश में इसकी क्या इंग्लिश है? Jealous. जस्ट जेलस। ऑफ Jealousy. देर इज अनदर वर्ड दैट इज एनवी। एनवी एनवी। वाला। हाँ। एनवी। एनवी। अब एनवी एनवी की नेगेटिव क्या है? कोटेशन हो जाता है, नेगेटिव एनवी, होता है। एनवी पॉजिटिव कॉनोटेशन है, जेलसी नेगेटिव है। अब मैं इसका समझाती हूँ आपको। अब आपके नेबर ने कार ली, आपको बड़ी जेलसी आई, इसने कार ले ली। फिर आप जाके पत्थर लोगे उसकी कार पे ना, स्क्रैचेस डालोगे। ठीक है। और ये होती है जेलसी, इसका ये नेगेटिव है। ठीक है। अब एनवी होती है, आपके नेबर ने कार खरीदी, आपको कि अच्छा उसने इतनी मेहनत करी कार, मैं भी मेहनत करके कार खरीदूंगा, ये तो एनवी। कॉम्पिटिटिवनेस एंड जेलिसी नहीं, एनवी भी जेलसी है, बट वो पॉजिटिव इन अ कॉन्नोटेशन। कॉम्पिट पर इन अ कॉम्पिटिटिव मैनर, राइट? कॉम्पिटिटिव हो या नहीं हो, एनवी, अगर कोई एग्जाम में फर्स्ट आया है तो आप कहते हो कि उसने बड़ी मेहनत करी, वो फर्स्ट आया, चलो मैं भी मेहनत करूं, मैं भी बिजनेस अपना रेस कर लूं, मेहनत से काम होता है, वो एनवी हो गई ना। मतलब कुछ भी पॉजिटिव है एनवी है, नेगेटिव है जेलसी है। पर हिंदी में एक ही वर्ड है। ठीक है। हिंदी में दो नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कॉनोटेशंस नहीं है, इंग्लिश में इसमें है कॉनोटेशन। ठीक है। सो अगर आपने कहीं पॉजिटिव वे में लिखना है, आई एम एनवियस ऑफ माई फ्रेंड, यू नो ही इज गॉट अ गुड ग्रेड, आई एम रियली क्योंकि मैं एनवियस। हमेशा कंफ्यूज होता हूँ इस चीज में, हाँ, इसलिए जेलसी, पूछा। जेलस होता है कि उसके तो साथ आ गए, मेरी जेलस, मेरे मेरे क्यों नहीं आए। एनवी इज आई ऑल्सो वर्क हार्ड एंड गेट ए 7 प्लस, राइट? दैट इज पॉजिटिव, एंड जेलसी इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। ठीक है, इस वे। ठीक है। All right, so this is it. This is a formal letter example. Now we'll do, okay, ये informal आ गई हमारे सामने, friend को। You are getting married. Write a letter to an English speaking friend. English speaking friend इन्होंने स्पेशली लिखा है, to invite him or her to the wedding. अब फ्रेंड की लेटर जो है ना, वो लंबी चली जाती है वो लेटर, क्योंकि आपने फ्रेंड की लेटर में ना ये भी डाल सकते हो, टू कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ऐसी बातें भी लिख सकते हो। फिर बिना बात के ये भी लिख सकते हो कि व्हाई डोंट यू कम ओवर फॉर द वीकेंड, वील हैव ए गुड टाइम, कुछ भी फालतू वालतू भी लिख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड को लिख रहे हो, तो वो लंबी जा सकती है। उसके लिए जो लंबा अगर करना है तो वो कुछ 4-6 लाइनें रट ही लो, कि अगर मेरे को फ्रेंड की लेटर आई तो ये तो मैं डाल ही दूंगी, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, लंबी भी हो जाएगी, सोचना भी नहीं पड़ेगा, टाइम भी नहीं वेस्ट होएगा। ठीक है। पर ये नहीं है कि जानबूझ के लंबी करनी है, बस 150 से कम नहीं जानी चाहिए, 150 के ऊपर चली भी जाए, 200 तक चली जाए तो भी कोई बात नहीं। ठीक है। गॉट इट? इज इट ऑल क्लियर? बट मैम, Yes, ma'am. इफ यार मैम, अगर हम जैसे याद करके जाते हैं और उसमें कुछ अच्छे वर्ड और अच्छे सेंटेंसेस करते हैं, तो हाँ, वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब याद करके जा रहे हो तो अच्छे से याद कर लो, कुछ डिफरेंट याद कर लो, हाँ, कुछ वही अपना वही। सेंटेंस बना लो, मेरे को अपनी लेटर में ये डालना ही डालना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो हर हर तरीके के हाँ, इनफॉर्मल लेटर में अपन यूज कर हाँ, सकते हैं, कैसा हाँ, भी क्वेश्चन। हाँ। हमारे फ्रेंड्स का बेटा था, उसने ना उन्होंने बोला कि तेरी आंटी कराती है आइल्स, उनसे कर ले। नहीं, फ्रेंड्स जा रहे थे किसी और सेंटर, वहां लग गया। ही टुक द आइल्स ओवर कॉन्फिडेंस में, ही गॉट ए 5.5। राइटिंग में। फिर हाँ, नहीं, टोटली ओवरऑल ही 5.5 थे, क्योंकि उन्होंने ओ, गाइड ही नहीं करा, ना रीडिंग में गाइड करा, ना लिसनिंग में गाइड करा। बस हम्म, थोड़ा सा देखा स्टूडेंट अच्छा है, थोड़ा सा बता हम्म, दिया, चलो जी, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर दे आया। फिर देन ही ज्वाइन मी। 1 महीना पढ़ाई करी, फिर मेरे को एक दिन कहता है, मैम मैंने सोच लिया है, मैंने विन विन सिचुएशन ऐसे में डालना ही डालना है, कहीं से भी, बाय हुक और बाय क्रुक। मैंने अगर अगर मेल फीमेल वाला कोई जेंडर वाला ऐसे आ गया तो ये लाइन मैंने डालनी डालनी है, जेंडर डिफरेंसेस आर डिसअपियरिंग नाउअडेज। ऐसे उसने सेंटेंसेस रट लिए। ओके। एंड बिकॉज honestly, students have taught me, he got a 7 that time. ओके, ही गॉट अ 7 दैट टाइम। मतलब उसके उसने ऐसे नोट्स बनाए हुए थे कि ये लाइनें मैंने डालनी डालनी है, स्पीकिंग के भी नोट्स बनाए हुए थे कि ये तो मैंने बोल ही देना एग्जामिनर को देख के, जो भी है। Basically, ma'am, मैम इस in that we speak or write a thing in a right form. So यस, there is a no mistake and no chance of यस, cutting a bed. यस, यस, दैट इज व्हाट, students have taught me कि these things work.
these Because things work. writing and in speaking, ma'am, these things, ma'am, there are lot of places in which you can go wrong, and you Yes. can be mistaken, and your Yes, band score can yes, yes. And you think also, reduce. you waste time thinking of You new yes, things to ma'am. write, and it goes Yes, ma'am. negative in the end. Negative. Yes, ठीक ma'am. है, वही मैं कहती हूँ ना, ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें करो, खत्म करो, रीडिंग प्रैक्टिस करो, लिसनिंग करो इस टाइम में। इसमें क्यों करना? अच्छा, एग्जामिनर्स, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, एग्जामिनर्स आर नॉट फेयर। अभी बैंड रेस तो 70-80% के स्टूडेंट्स के जो रीवैल भरते हैं उनके बैंड बढ़ते ही बढ़ते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग में। रीडिंग लिसनिंग में कभी नहीं बढ़े। मेरी स्टूडेंट के राइटिंग में 6 से 7.5 होके आए, और स्पीकिंग में उसी स्टूडेंट के 6.5 से 7 होके आए, उसी एग्जाम में। एक एग्जाम में दोनों में 6-6 थे, सॉरी। एक के 6 से एक के 6 से 7.5 हो गए, डेढ़ बढ़ा, और दूसरे में 6 से 6.5 हो गए। अब सोचो, 2 बैंड बढ़ जाए किसी के रीवैल में, कैसे एग्जामिनर्स बैठे हैं वहां पे? अब सोच लो, वैसे ही है हर जगह। ओके। अभी कनाडा में एक स्टूडेंट का 1 बैंड बढ़ के आया है, दुबई में एक स्टूडेंट का 1 बैंड बढ़ के आया है। सो नो, एग्जामिनर सब जगह ऐसे ही हैं। आप ना 8 का लिखोगे तो 7 आएंगे। राइटिंग में बहुत हाई स्कोर एक्सपेक्ट मत करना, उन्होंने नहीं देना। वर्क ऑन योर रीडिंग एंड लिसनिंग, वो आपने अगर पूरे करेक्ट करे, आपके 9-9 बैंड आएंगे। थोड़े 1-2 गलतियां होगी तो भी 8 आएंगे, 7.5 8 आएंगे। वर्क ऑन दोज आर योर बैंड स्कोर्स, नोबडी कैन स्नैच अवे फ्रॉम यू। बट राइटिंग एंड स्पीकिंग इज ए सब्जेक्टिव मार्किंग। सो डू योर बेस्ट। ठीक है, गलतियां नहीं करो, सिंपल बोलो। 7-7 तो पक्का आ जाएं, 7.5 8 आप करोगे तो 7 पक्का आएंगे, ये मान के चलना। ठीक है, और 7.5 8 पक्का करने के लिए सिंपल लिखना। जितना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सोचोगे, 7 भी हाथ से फिसल जाएंगे, 6 भी फिसल जाते हैं। ठीक है, सो जस्ट बी सिंपल एंड करेक्ट। So here it is, your English speaking friend, to invite him or her to the wedding. Describe who you are going to marry, what will happen on the wedding day, explain why it is important for him or her to be at the wedding. तो ये आपकी लेटर है। सो डियर सारा, अब मैंने नाम इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड का चुना है, सारा। ठीक है, आप डियर गीता या सुषमा लिख दोगे तो वो इंग्लिश स्पीकिंग लगेगी नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि रियल लाइफ सिनेरियो इमेजिन करो। इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड है, वो इंग्लिश मतलब फॉरेनर ही है एक तरह से, राइट? और फ्रेंड है आपकी, तो थोड़ी वो कहानी बनानी है। सो डियर सारा, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन रेडियंट हेल्थ एंड द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स। ये मैं हर फ्रेंड की लेटर की फर्स्ट लाइन ये बनाती हूँ। ये मेरी हर इनफॉर्मल लेटर की फर्स्ट लाइन है। ठीक है, अब आपने इसको चेंज करना है तो चेंज वाली लाइन अपनी एक बना लो, उसी को लिखना हर फ्रेंड की लेटर में। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ यही लिखो। आप लिख सकते हो, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड चीयर। दैट इज ऑल्सो गुड। गुड हेल्थ एंड बस चीयर। एक बार आपसे चेक करो, बस एक चेक बार करवा चेक लें करा कि लो, हाँ फिट ये है, हर लेटर में वही लिखो। और 10 चीजें हाँ, नहीं सीखने की जरूरत। समझ गए? राइट दैट इज इट। राइट। चेंज कर लो, चेंज कर लो, अपनी वही पकड़ लो फिर लाइन। बस ये कह रही हूं मैं। ठीक है, सो होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन रेडियंट हेल्थ एंड, ये लाइन मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि व्हेन आई वाज इन द मेडिकल कॉलेज, मेरे नाना जी और मेरे दादाजी दोनों की लेटर्स मुझे आती थी, हफ्ते में 2 या 3 दोनों की। ओके। और मेरे नाना जी की हर लेटर इस लाइन से बिगिन होती थी। ओके, ही वुड राइट लाइक दैट, एंड ही वाज अ वेरी लर्नड मैन, एंड ही वुड राइट लेटर्स टू मी। एंड उन दिनों में लेटर्स होती थी, और हमारे हॉस्टल में बड़ा सा एक टेबल होता था एंट्री पे, उस पे सबकी लेटर्स ऐसे खिलरी पड़ी होती थी। एंड एवरी डे आई हैड अ लेटर, एवरी डे। मेरी 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 फ्रेंड्स मेरे से जेलस होती थी कि इसकी बहुत चिट्ठियाँ आती हैं, हमें कोई लिखता नहीं है। Okay, but every day, because my Nanaji and Dadaji both would write to me, just to cheer me up. हॉस्टल में थी, अकेली थी, उनको लगता था कि बोर ना होए, लेटर रोज लिखते थे। और वो लेटर्स मैंने अभी तक संभाली हुई हैं मेरे उसमें, पर मैं देखती हूँ कोई फायदा नहीं है संभालने का। अभी भी किसी ने इच्छा ही नहीं जाहिर की, मेरे बच्चों ने या ग्रैंड चिल्ड्रन ने, कि हमें वो लेटर्स दिखाओ, हम पढ़ना चाहते हैं पहले कैसी लेटर्स होती थी। सो आई थिंक दे आर जस्ट गोइंग टू गो अवे विद मी। एनीवेज, वो तो ऑन अ लाइटर नोट है। बट वैसे मैं बता रही हूँ, नाना जी की लेटर ऐसे शुरू होती थी, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन रेडियंट हेल्थ एंड द बेस्ट ऑफ स्पिरिट। सो आई पिक्ड अप दिस लाइन, इट वाज विद मी। आई एम गेटिंग मैरिड। अब उसको आपने मैरिज के लिए बुलाना है, और पहले
इंट्रो लाइंस में उसको इनविटेशन देनी है। आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 5 मार्च 2024 एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू फॉर्मली इनवाइट यू। अब वैसे तो इनफॉर्मली फ्रेंड को तो फोन भी कर दोगे ना, भी तूने आना है, मेरी शादी है, पर एक लेटर फॉर्मल इनविटेशन के लिए दे रहे हो। आई एम टू फॉर्मली इनवाइट यू टू द वेडिंग। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई कैन नॉट थिंक ऑफ दिस डे विदाउट योर प्रेजेंस। come please come at least 1 week in advance so that you can attend the pre wedding celebrations also। तो फ्रेंड की लेटर हमेशा लंबी हो जाती है, ये ओपनिंग लाइंस है। फिर उसने डिस्क्राइब हु यू आर गोइंग टू मैरी, इसको मैंने ये पैरा दिया, माय फियांसी तरुण शर्मा। अच्छा मुझे ये बताओ, फियांसी के स्पेलिंग है FIANCE। फियांसी के स्पेलिंग में डबल ई भी आता है। दोनों ही फियांसी के स्पेलिंग्स हैं, क्या फर्क है दोनों में रोहित? मेल एंड फीमेल। हाँ, तो ये फियांसी इज फॉर मेल और डबल ई वाला इज फॉर फीमेल। ठीक है। यस मैंने मैम, अपने यस मैम। फियांसी का नाम तरुण शर्मा रखा है। माय फियांसी तरुण शर्मा इज वर्किंग विद डेल इंटरनेशनल as a senior web developer. We met at my cousin's wedding 6 months ago for the first time, and we had an instant liking for each other. He approached my parents through his parents, and so it is an arranged come love affair, love marriage affair. Okay, arranged come love marriage affair. I heard you are doing a research. So tell what will happen on the wedding day. We बताना है why it is important for her. So why it is important for her? I heard you are doing a research on the Indian tradition and culture. Therefore, it makes it all the more important for you to attend the wedding. The pre-wedding celebrations will start on 20th February. There is a ring ceremony. अब ये मैंने ना order same नहीं copy करा. What will happen on the wedding day? मैंने पहले थर्ड वाले पॉइंट को आंसर दे दिया। ये मैं आपको बोल रही थी ना कि जो जिस मर्जी ऑर्डर में दे दो आंसर, इट डजेंट मैटर। ओके। The pre-wedding celebrations will start on 20th February. There's the ring ceremony, the lady sangeet and the mehndi ceremony, the dupatta ceremony, and finally the great wedding day on the 5th March. Please let me know your itinerary. ये word सीख लेना क्योंकि ये काफी letters में डलता है। Itinerary. So that I can make arrangements for your stay. Itinerary होता है पूरा टोटल प्लान, किस दिन आना है, किस दिन जाना है, कितने दिन रहना है। That is itinerary. Okay? Itinerary. And dupatta word, let me check whether it is there in the Oxford Dictionary or मैम, शेड्यूल, देयर इज आल्सो वर्ड शेड्यूल, राइट मैम? तो what? शेड्यूल और मैं शेड्यूल, और स्केड्यूल दोनों, स्केड्यूल और शेड्यूल दोनों करेक्ट है। ओके, दोनों तो करेक्ट। मैम वो जो है, पर वो मैम वो और इसमें फर्क होता है ना मैम? नहीं, कोई फर्क नहीं है किसमें। इन ये दोनों शेड्यूल नहीं और नहीं, इस वाले वर्ड में जो आपने एक अभी बोला। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। आपको दुपट्टा दिख रहा है चुन्नी के लिए दुपट्टे? दिस इज देयर यस इन द मैम। डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड वालों ने ले लिया ये वर्ड दुपट्टा। ओके, उनको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिला, उन्होंने पंजाबी से उठा लिया। चलो। ओके। अच्छा, फिर आपने शेड्यूल और स्केड्यूल पूछ रहे हो ना, ये लो, आपके सामने डिक्शनरी खुली हुई है। ये है। शेड्यूल यूएस वाले बोलते हैं सुनो, शेड्यूल। शेड्यूल शेड्यूल भी करेक्ट है और स्केड्यूल भी करेक्ट है, वो अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग का फर्क है। अच्छा, इन्होंने एक ही दी है पर दोनों करेक्ट है। ओके। ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश दोनों में ही फर्क है। ठीक है। शेड्यूल मैम यूएस वाले बोलते हैं, स्केड्यूल एज यूएस फार वाले एज आई बोलते नो। हैं। यस मैम। ओके। Behind schedule. ये तो शेड्यूल ही बोल रहे हैं, बट हाँ स्केड्यूल तो भी करेक्ट ये है। तो मैम वो That makes ऑक्सफोर्ड है ना मैम, ऑक्सफोर्ड तो इज इन ऑक्सफोर्ड है। यूके। नहीं, ये यस ब्रिटिश मैम। स्पेलिंग, अमेरिकन भी देते हैं प्रोनाउंसिएशन। ये इनमें दोनों ओके प्रोनाउंसिएशंस लिखी होती हैं। ओके। ओके ऐसा ओके नहीं है, ओके बट यहाँ ओके। पे समहाउ इन्होंने एक ही दी है। दैट्स बट ओके। मैंने यूएस मूवीज में देख रखा है मैम, दे यूज शेड्यूल, दे शेड्यूल भी ऑलवेज यूज करते हैं, हाँ शेड्यूल। वो है। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ओके। पर मैं ये पूछना चाह रहा था मैं, इटिनरी जो आपने जो वर्ड बताया ना, आइटिनरी, और आइटिनरी। हाँ। आइटिनरी, इसमें और शेड्यूल में क्या फर्क फर्क है? फर्क है। शेड्यूल तो होता है कोई भी किसी भी चीज का। आइटिनरी इज ओनली रिलेटेड टू योर रूट और जर्नी, प्लान्ड रूट और जर्नी। ये जर्नी से रिलेटेड है। अब बाहर से बुला रहे हो अपनी फ्रेंड को, वहाँ आइटिनरी सूट करेगा कि शेड्यूल सूट करेगा? शेड्यूल होता है तुम ऑफिस कब जाते हो, कब आते हो, आपका क्या शेड्यूल है, डेली रूटीन क्या है, इस चीज को करने का क्या ओके। शेड्यूल, तो वो है। यहाँ पे आइटिनरी ही चलना है। ओके। कि आइटिनरी। क्या क्या होगा फॉर अ डे हाँ, शेड्यूल कर। वाली चीज। व्हाट इज योर शेड्यूल फॉर द डे, आपने क्या करना है आज? ओके। अब ये इसका मीनिंग आपने देख लिया। अब शेड्यूल का भी दिखा देती हूँ मीनिंग। अ प्लान रूट और जर्नी। शेड्यूल इज नॉट a planned route or a journey. Schedule is a plan for carrying out any process or procedure. ओके। डे टू डे प्लान और टाइम टेबल, टाइम टेबल। ओके। जर्नी के साथ नहीं है रिलेटेड शेड्यूल।
वो आइटिनरी ही है। ओके, दैट इज इट। ओके ओके मैम। वो आइटिनरी ही है। चलो, ये आपकी होगी एक एक इनफॉर्मल लेटर। लुकिंग फॉर होपिंग टू सी यू एट द वेडिंग, अब इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे होपिंग की जगह मैं कर रही हूँ लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब लुकिंग फॉरवर्ड टू कर रहा है तो सी की जगह क्या हो जाएगा? सीइंग Seeing. सीइंग यस, आईएनजी फॉर्म। बस हो गया। योर्स विद लव या योर्स लविंगली, कुछ भी लिख दो नीचे अपना नाम। Mom, यस। mom, this tradition you have to write in capital letter T and culture. ओ, इंडियन ट्रेडिशन है ना? इंडियन Yeah. ट्रेडिशन एंड कल्चर, नो इट शुड बी स्मॉल। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। ओके, इट हैज टू बी स्मॉल। Indian has to be capital I. This is, Yes. Yeah. yes. Yeah. Thanks for correcting me over there. Okay. So Okay, ma'am. that is the informal letter. Okay, ma'am. Okay. Then we do one example of a semi-formal also. Okay. ये formal है। Semi-formal are very less ना, so ट्रूली भरती हूँ यहाँ पे। ट्रूली जहाँ आ जाएगा तो फिर वो सेमी फॉर्मल की एग्जाम्पल है। ये आ गई सेमी फॉर्मल। ओके। सो ये है, योर colleague has invited you to his farewell party. You will not be able to attend the party. Write a letter to your colleague. Explain the situation. Say why you will not be attending. Say something about the period you have worked together and his or her work. So this is the letter. Colleague ने आपको बुलाया है, उसकी फेयरवेल पार्टी है, वो जा रहा है आपकी कंपनी से। ठीक है। आप उस पार्टी में जा नहीं पाओगे। अब फ्यूचर में पार्टी है, अभी होनी है, आप वहां जा नहीं पाओगे। आपने उसको लिखना है कि क्यों नहीं जा पाओगे, और पूरी सिचुएशन बतानी है क्यों नहीं जा पाओगे, और फिर आपने उसके साथ जो समय बिताया उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। सो दिस इज ए सेमी फॉर्मल लेटर। डियर निधीश, यहाँ पे ऊपर नाम ही आएगा। ओके। It was with mixed emotions that I got the news of your retirement, because it also brings with it the fact that you are leaving us all. एक तो वो पार्टी दे रहा है, जा रहा है, तो गुड न्यूज़ है रिटायरमेंट की, बट मिक्स्ड इमोशंस थी मेरी। एक तरफ तो मैं खुश थी कि तू फ्री हो जाएगा अपने पर्सनल कामों के लिए, दूसरा दुख था कि यू विल बी लीविंग अस ऑल। तो मिक्स्ड इमोशंस करके मैंने शुरू करा है। यू कैन जस्ट राइट सिंपली, ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर फेयरवेल पार्टी। मैम थैंक्स फॉर, यस। इसमें ओपनिंग लाइन में वैसा कुछ नहीं है, इसमें आप आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, वो थोड़ा फॉर्मल टच है। अब इसमें आप इनफॉर्मल फॉर्मल का मिक्स करोगे, जहां जरूरत होगी आई एम राइटिंग दिस लेटर। अगर कोलीग ने कोई आपको कार्ड भेजा है तो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू, कर सकते बेसिकली हो। बेसिकली मैम सेमी फॉर्मल वहाँ पे होगा जहाँ पे हम किसी को जानते हैं, बट हाँ, वो बट हमारे क्लोज रिलेशनशिप में नहीं है, या हमारा कोई दोस्त नहीं है या रिलेटिव हाँ नहीं है, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है। ओके Thanks for ओके। inviting me to your farewell party, but regretfully, I have to inform you that I would not be able to make it on that day because of an important family wedding on the same day. अब ये ऐसा सिनेरियो है कि वो कुलीग समझेगा कि नहीं आ सकता, भी उसके घर में तो शादी है उसी दिन। ठीक है। अब अपने घर की शादी थोड़ी छोड़ के मेरी फेयरवेल पे आएगा, तो अंडरस्टूड हो गया ना उसके लिए। रीजन ऐसा डालना कि वो समझ जाए। ठीक है। यस मैम। एग्जामिनर समझ जाए, राइट मैम? आपका जिसको लिख रहे हो वो समझ जाए, एग्जामिनर तो समझ जाएगा ना कि आपने सही से समझाया कि नहीं। ओके, गॉट यस इट। मैम। So it so happens that my first cousin's wedding is also on 14th February. It's a family affair and I cannot be absent from there. I'm an active participant in the arrangements of that day. Any other appointment could have been avoided or postponed, but I just cannot miss this one. Anyways, I wish you all the best in life. Whatever time I have spent with you in the office will always have pleasant memories in my mind. It is from you that I have learned how to meticulously plan my time. Meticulously होता है carefully। आप carefully कर सकते हो, meticulously वैसे अच्छा प्यारा word है। You have always been my friend, philosopher, and guide. I shall always keep in touch through phone and email. My email ID is rajeshkakkad@rediffmail.com. Do let me know of your new phone number so that I can keep in touch. Hoping to hear from you soon. अब यहाँ पे क्या करना है? Looking forward to. लुकिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम हियरिंग Looking forward to. Hear हियरिंग हियरिंग from. फ्रॉम यू। हियरिंग हाँ, फ्रॉम यू, हियरिंग देखो आएगा आप, मैम। एक आपको चांस मिल गया
कि आप थोड़ा इम्प्रेस कर लो कि हमें आती है ये यूज. Hearing from you soon. Yours Yeah. truly, Rajesh. अब we have done today's class. 1 घंटे से लंबी खिंच गई. But I think this will be one comprehensive class which I can share with students who want to learn about letter writing basics Ma'am, and there were lots of confusions, ma'am, which today we got हो गई solved. ना सॉर्ट आउट. ठीक है. हाँ मैम, बहुत सारी कंफ्यूजन थे मैम. हाँ, अच्छा हुआ ले ली मैम. सिंपल है. One, I हाँ, have one question, ma'am. Ma'am, in our book, whatever the question I read that, but is there is a chances to in exam we got a new or anything. Although I know that we have to make our नहीं, न्यू notes. न्यू लेटर आ सकती है भाई. 90% चांसेस है बुक से आएगी. 10% नहीं आएगी. अब 10% में आपको नहीं आ गई तो आपके लिए तो 100 ही हो गया ना वो नहीं. बट पता है क्या, आप इतनी लेटर्स करके जाओगे, आप कोई भी लेटर So लिखो. make it. डोंट वरी. Hmm. ओके. जस्ट गो थ्रू दैम. दिस इज अ Okay. वेरी गुड कलेक्शन ऑफ लेटर्स. बहुत अच्छी है. कोई नई भी आ जाएगी ना, इन्हीं में से लिख लोगे. ओके. Okay, ma'am. डोंट वरी. Yeah. आई होप Thank दिस you. क्लास वाज यूजफुल. Very useful, ma'am. अच्छा. Solve most of all doubts of us. हाँ जी, हाँ जी.